हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर समझा था एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ओबी एज वेल। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड यूनिट ऑफ स्टडी। Talking about the unit of study, which has been categorized into three parts. One is individual behavior, group behavior and organizational system. इंडिविजुअल बिहेवियर में क्या है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को स्टडी किया जाता है। ग्रुप बिहेवियर में इंडिविजुअल एम्प्लॉय हाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन फिट्स वेल विद द ग्रुप ऑफ पर्सन और नॉट। सो एक इंटरपर्सनल बिहेवियर इंडिविजुअल का स्टडी किया जाता है और एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, पॉलिसीज़ में कैसे एक्ट और रिएक्ट करता है। सो इसके इंटायर स्टडी को जो है हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं और जिसको जो कैटेगराइज किया गया है यूनिट ऑफ स्टडी में। अब चलो देखते हैं यूनिट ऑफ स्टडी को कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि इंडिविजुअल बिहेवियर स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनैलिटी को स्टडी करना पड़ता है कि हाउ अ पर्टिकुलर पर्सन एक्ट एंड रिएक्ट इन अ सर्टेन सिचुएशंस। परसेप्शन कि व्हाट इज़ हिज परसेप्शन अबाउट द जॉब। जैसे कि आपने किसी को जॉब ऑफर दिया, परसेप्शन क्या है, या किसी को कोई सिचुएशन दी कि कोई राइट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है, तो परसेप्शन क्या है एम्प्लॉय की। देन टॉकिंग अबाउट द लर्निंग स्किल्स, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। सिमिलरली ये जो चीज़ें हैं एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी की जाती हैं। और ग्रुप बिहेवियर की बात करें कि वही इंडिविजुअल जब वो ग्रुप में काम करता है तो वो ग्रुप डायनामिक्स में फिट बैठता है या नहीं बैठता है। Individually that in a same job that particular person may be able to excel, but whenever the same task or other task is being given in a group might not be able to perform up to the optimum level. तो ग्रुप डायनामिक्स को भी स्टडी किया जाता है। वर्क टीम्स में पावर एंड पॉलिटिक्स, लीडरशिप स्किल्स हैं या नहीं हैं, फॉलोअर्स हैं या अच्छे लीडर्स हैं या अच्छे फॉलोअर स्किल्स हैं या नहीं हैं, एंड देन द कम्युनिकेशन। सो दिस इज अबाउट द ग्रुप बिहेवियर ऑफ एन employee. Talking about the organizational system where organizational change and organizational culture के with respect में employee के behavior को study किया जाता है। Talking about the importance of organizational behavior, why is it important for a manager to understand the organizational behavior? So we have noted down in that way. One is it increase the productivity, harmonious relationship to motivate employees, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में बहुत हेल्प करता है और अलाइन करता है इंडिविजुअल एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस को विद ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्टिविटी, कि ओबी को स्टडी करने से प्रोडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन is the key issue with every organization, and if employee satisfaction, and it not only depends upon the monetary benefits. So you see that certain monetary benefits can be given to an employee and would be able to perform more, would enhance their productivity. No, it is not the case, but also how they are being treated in their organization by their superior. So उनको जो ट्रीटमेंट है वो कैसा दिया जाता है, हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इफ दे आर ट्रीटेड वेल एंड इफ दे फील सो कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, अल्टीमेटली their productivity will go upside. Therefore, for you as a manager, it is important to understand the behavior of an employee so that productivity can be enhanced. Second is harmonious relationships. So harmonious relationships means एक employee का organization में और लोगों के साथ कैसे relations हैं. The moment the relationships are conducive in nature, that means harmonious relationship वहाँ पे हैं. So it can be developed by developing certain behavioral skills, behavioral pattern. Now let us talk about to motivate employees. In order to motivate employees, there are two things that a particular person can be motivated. One is monetary benefits and by providing the non-monetary benefits. So non-monetary में आएगा appreciation and other things. So keeping that thing in a view, where work-life balance nowadays has been a key issue in organization and it is a prevailing one. And work-life balance involves putting proper emphasis between work life and a personal life. Basically, where employees try to have a balance between their work life and personal life. However, in the present environment, talking about the today's context, work has become quite demanding and many a times employees complete their work at the cost of their personal leisure. So this results in work stress, which is injurious to employees, and with the knowledge of organizational behavior, right,
both employees and superiors can make attempt to maintain the work life. जब आप लोगों को समझते हैं और when you try to give their best and if you're understanding their behavior, why they are just performing certain, why they are exhibiting certain behavior in an organization, you try to understand the cause of it and hence you provide the remedy to it. Fourth one is strategy formulation. An organization works in a dynamic environment. Talking about any organization that works in a very dynamic environment, which means dynamic means which keeps changing. In order to align organization to environment, the organization changes its strategy and structure. So organization के लिए क्या है, environment के साथ match करने के लिए उनको अपनी policies और strategies में changes लाने पड़ते हैं, and that changes are to be introduced by the management but has to be accepted by the employees themselves. अगर employees उसको accept नहीं करते हैं, then organization will not be able to introduce certain quick changes in their organization, and introducing these changes organization performance can be improved. So therefore, for a strategy formulation, it is important for any organization to understand the behavior of an employee. अगर इसकी एग्जांपल लेंगे, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो लॉन्च किए गए हैं. इफ़ द इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज़ बिन लॉन्च्ड बाई ए कंपनी, अगर इसको टॉप मैनेजमेंट जो है इसको लॉन्च करती है बट द लोअर लेवल मैनेजमेंट आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, देन इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. And if it is a huge loss for the organization will not be able to survive for the longer run. So keeping that thing in a view, strategy formulation के लिए भी मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अंडरस्टैंड करना और बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, aligning employees performance with the organization. Sometimes we have seen that the employees are working in a certain direction and organization has a different vision. So aligning vision of an employee with the vision of an organization somehow can create a competitive edge for the company. So therefore these are the some of the key points that I have noted down and thought to share with you guys are really important when it comes to the importance of studying organizational behavior. Thank you so much for watching.